वेलकम टू वी लर्न में आपका स्वागत है. Today's topic for discussion is consumer decision making process, problem recognition, information search, and evaluation of alternatives. The topics covered here are problem recognition, information search, and evaluation of alternatives. When we see this diagram of consumer decision making process, the first stage in is problem recognition. The second stage is information search. पहले हम एक नीड रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रॉब्लम की हमें अवेयरनेस होती है, फिर उस नीड के लिए हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं. उस इंफॉर्मेशन सर्च के बाद हम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स इवेलुएट करते हैं, फिर हम परचेज़ करते हैं. परचेज करने के बाद हम फाइनली जो करते हैं वो पोस्ट इवेलुएशन होता है. उस पोस्ट इवेलुएशन एक्शन के बेसिस पे हमारी फिर से नीड रिकग्निशन स्टार्ट होती है. अब प्रॉब्लम रिकग्निशन क्या है? प्रॉब्लम रिकग्निशन इज़ अ क्रिटिकल स्टेज in consumer decision making process because without it there is no deliberate search for information. There are situations that lead to problem recognition. First stage होती है depletion of stocks. The second is dissatisfaction with goods in stock. The third is environmental changes. The fourth is changes in financial situation. And the fifth one is marketer initiated activities. हम इसमें क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं? पहला है एक्टिविटी एनालिसिस. तो एक्टिविटी एनालिसिस बेसिकली फोकस करता है हमारा this approach basically focuses particularly include activities such as cleansing the house, preparing meals, or travel by train. The survey or the focus group is conducted by determining what problem consumer face in the course of performing the activity. दूसरा है product analysis. Product analysis focus on examining the purchase and or use of a particular product. तीसरा है problem analysis. Problem analysis start with a list of problem and the respondents are asked to identify with the activities. फिर है human factor research. This type of research is quite helpful in identifying consumers' functional problems of which they are not aware. The last is emotion search research. It is believed that emotions often have a very powerful impact on problem recognition. अगर हम इंफॉर्मेशन सर्च की बात करते हैं, इट रेफर्स टू व्हाट कंज्यूमर सर्वेज इन हिज और हर एनवायरनमेंट फॉर suitable information to make a satisfying purchase decision. Now, these takes a step to gather, educate information search to select the appropriate solution. Right? In case of high involvement purchase, the relative importance of external information search tends to increase. It seems that the type of information sought by consumer directly depends on what all that the person is aware of. सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो कौन से हो सकते हैं? रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, हमारे आजकल चैट ग्रुप्स हैं वो हो सकते हैं, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ पैम्फलेट्स और हैंडआउट्स, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, मार्केटर इनिशिएटेड भी हो सकते हैं. अगर हम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो कुछ होते हैं हमारे इंटरनल, कुछ होते हैं हमारे एक्सटर्नल. तो हमारे जो इंटरनल सोर्सेज में होते हैं दे आर दोज विच कुड बी ईदर एक्वायर्ड एक्टिवली एंड देयर आर अदर इंफॉर्मेशन विच आर एक्वायर्ड पैसिवली. अगर हम एक्टिव एक्वायरेशंस की बात करें तो वो होते हैं हमारे पास सर्चेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और विच आर एक्वायर्ड पैसिवली वो हमारे लो इन्वॉल्वमेंट लर्निंग्स होते हैं. एक्सटर्नल इंफॉर्मेशंस में हमारे एक्टिवली जो हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं उसमें हमारे पर्सनल सोर्सेज इंक्लूड हो सकते हैं, मार्केटर कंट्रोल्ड सोर्सेज होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं और अदर एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. पहला है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी विच इज़ बेसिकली स्टोर्ड
information based on earlier searches, personal experiences and low involvement learning. हमारे कुछ पर्सनल सोर्सेज होते हैं, दीज इंक्लूड्स फैमिलीज, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड पीयर ग्रुप्स. थर्ड हमारे सोर्स होते हैं independent sources. Such sources includes newspaper, magazines, journals, consumer reports. एक होता है हमारा marketer controlled sources. These includes advertising, sales personals, direct mails. एक होता है हमारा experiential sources. They refer to inspection of products, right? जो हम खुद experience करते हैं और product trials के basis पे. इनके लिए जो हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करते हैं, पहली जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं वो है मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी. हियर द नेचर ऑफ मार्केटर्स ब्रांड इज दैट कंज्यूमर इन द टारगेट मार्केट परचेज इट हैबिचुअली. द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी इज टू मेंटेन द बिहेवियर. कुछ भी हम डेविएशन ना करें. दूसरा है डिस्ट्रप्ट स्ट्रैटेजी. इफ द ब्रांड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इवोक्ड सेट ऑफ द टारगेट कंज्यूमर्स and nominal decision making is what they engage in, the marketer's appropriate strategy is to disrupt, discontinue कर दें, ठीक है, the existing pattern of decision making. Third है capture strategy. Here the consumer generally considers just a few brands and evaluate them on only on few attributes, right? Intercept strategy की बात करें is also related to consumers' limited decision making approach. If the marketer's brand is not part of the evoked set of target market, the appropriate strategy is to intercept consumers during their information search. फिर एक हमारी आती है preference strategy. Is appropriate when the brand is part of the evoked set of consumers in the target market and the approach to decision making involves extensive information search. एक हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो मार्केटर्स फॉलो करते हैं वो है एक्सेप्टेंस स्ट्रैटेजी. हियर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन द सिचुएशन when the target consumers do not search for information about the marketer's brand. The basic objective here of the marketer is to move the brand in the evoked set of consumer rather than try to sell the brand. एक है हमारा evaluation of alternatives. Basically जब हमारे पास कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसके कहीं ना कहीं बहुत सारे alternatives होंगे. It could be in various dimensions, उसके features, उसके characteristics, benefits. तो हम उसको evaluate कर रहे हैं अपने alternatives को, ठीक है. तो ये हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस में आ जाता है. नाउ देर आर टू सिंपल एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व हियर. द फर्स्ट वन इज व्हाट आर द सिचुएशंस दैट लीड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द सेकेंड इज व्हाट आर द स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग एंड वी